Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have come to Pahalgam. It is a beautiful place, Pahalgam, which translates into a village of shepherds. And I have come here with my students today, and it's an amazing experience. We're in the park right now, and we are planning to go to other areas as well. There are other pastures. There's a zoo, and in the backdrop, if you can show my viewers, there's a mountain. It is a wooded mountain. And yeah, amazing view in that part as well. There are some mountains, and right now we are in the middle of a park, and my students, they are taking some pictures, and I thought that I have got a few minutes, and so I should make a video on Pahalgam and on my trip, and I should share my experience of being here and how amazing it is. It's a wonderful place, mind-bogglingly beautiful, and when you are with your students, with your friends, and the journey, it becomes even more amazing. And I think I urge my viewers to come to this place. There you can see, we'll show you a little later, that we have a river here, few mountains, few meadows, plains, parks. It's a complete package of beauty. The serenity, the air of serenity, beauty of this place is surreal. It is beautiful. आप थोड़ा बोलिए क्या लग रहा है आपको? So we're enjoying a lot here, and it's actually natural beauty. We have to enjoy. माशाल्लाह, that's It's great. everywhere is natural beauty. So it's all about that thing. We are enjoying a lot with our inspiration legend as well, Sajid sir. Oh, that's great. Akib, how are you? I'm fine, thanks so much. What about you? Alhamdulillah, I'm fine. So how's it going? It's going well, thanks so much. Hey sir, how are you? Alhamdulillah, fine. What about you? Well, Alhamdulillah, it has been a while to visit at Pahalgam. Okay, where do you live? MashaAllah. In which class do you study? Oh, that's great. Okay, do you like Pahalgam? Thank you so much. Okay, we're gonna talk to some other students. We're gonna talk to some people here, and let us see what they think about it. Okay, Umar, where do you live? कहाँ रहते हैं आप? Very good. आप कहाँ पे पढ़ते हैं? माशाल्लाह, यहाँ पे मजा आ रहा है? क्या क्या देखा है यहाँ पे? Okay, it's a very beautiful place. I can show you in the video. I can show you forests and everything else, meadows here and water and everything. You can see that in the video. And we'll try to talk to other people too. Okay, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? Okay, what's your name? My name is Meera Shetty. Okay, आप कहाँ से? Okay, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? Greenland. तो यहाँ पे पहलगाम आके आपको कैसा लगा? I'm feeling very happy. Excited? Yes, I'm really excited. माशाल्लाह, आपको कैसा लगा यहाँ पे पेड़ को देख के कैसा लगा? डर तो नहीं लगा? लेकिन डर भी लगा, शौक आ गया। Okay, माशाल्लाह। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? Greenland. आपका नाम क्या है? कहाँ से? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? माशाल्लाह, यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? Okay, I have one more student with me. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिक्र मुदस्सिर बेग है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं शोपियान से हूँ। शोपियान से। शोपियान में आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? न्यू ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान। किस क्लास में? तो चलिए, आज आप यहाँ पे आए पिकनिक के लिए पहलगाम, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, जब स्कूल के साथ आते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, तो आपने एंजॉय किया यहाँ पे आज? हाँ, बहुत। तो यहाँ पे आके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? यहाँ पे मुझे
वो वहाँ पे बियर्स अच्छे लगे। अच्छा, ब्लैक बियर्स आपको हाँ, अच्छे ब्लैक लगे। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह है और वाटर वगैरह वो भी पसंद आया होगा आपको? कोई बात नहीं, तो आप फिर यहाँ आना चाहेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। इंशाल्लाह आप उनके साथ ही आएंगे। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया होगा और टीचर्स के साथ भी एंजॉय किया होगा। आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर मुबश्शिर है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आप अपने स्कूल को पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। Are excited to talk to us, so we'll talk about this place and let me ask them some simple questions. Okay, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। माशाल्लाह, वो तो दिख रहा है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपने सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया? हमने एनिमल्स को देखा। अच्छा, एनिमल्स को देखा, डर नहीं लगा? नहीं। सीरियसली? यस। लंच में क्या था? लास्ट में हमें था कबाब और रिश्ता। माशाल्लाह। बहुत ज्यादा खाया। तो आप फूडी है, आप बहुत ज्यादा खाते हैं? मैं खाता हूँ कभी कभार, कोई बात नहीं। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया? यस। कितने फ्रेंड्स थे आपके यहाँ पे? 2-4। तो उनके साथ कितना मजा आया? बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगा आज दिन में? और सबसे अच्छा लगा मुझे जूही आज। तो आप मेरे साथ सब लोग एक कुछ वर्ड्स बोलेंगे, ओके? वाटर, करियर, टूरिस्ट, प्लेस, Tomato. टमाटो, पोटैटो, onion, cucumber, well, you can say enjoy, cricket, friends. Thank you so much. I am with some students. They're from private school, and we're going to talk to them and let us see how they feel, and let's see how they're feeling right now. The feeling is great. Everybody is on cloud nine. Everybody was very much eager to come to this very site. This place is rich in scenic beauty, and we have been to so many places, and this place is quite awesome, and the feeling is very great. All the students are feeling very ecstatic, and they are very much, excited about this outing. So it is a kind of it has an educational value, this outing, because most of the students here they get this they get the chance, they get the opportunity to interact with so many other students who are coming from different schools. So it is a kind of there is a cultural amalgamation takes place, and ideas are shared, and when we interact with people, it gives you that extra edge in terms of developing your chance. That's what I mean to say. So this is a chance to be outspoken, to be candid, and that's the platform we are actually trying to provide to our students when we allow them to go to these beautiful places like Pahalgam, Kumail. Everybody knows that our valley, Kashmir, that is rich in scenic beauty, and there is no parallel to Kashmir so far as its beauty is concerned, so far as its charm and attractions is concerned. Indeed, it's really important to take students for picnics, to short picnics, or to such places so that they get and more importantly, they get to know about the historical importance. They explore things themselves. When they are to such outings, they know people, they know places which are quite unknown to them. So this gives them the first-hand experience, and that is the kind of advantage when we take students to such trips. It's very nice. So we have some students that we would like to talk to. Hello, how are you? What's your name? Where do you study? Alamdar Education Institute. So यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? माशाल्लाह. How are you? What's your name? Okay, where do you live? Okay, in which school do you study? Okay, Alamdar Education Institute. So यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है अभी? आपने enjoy किया? किसके साथ ज़्यादा enjoy किया? अपने friends के साथ? तो आपने क्या खाया?
माशाल्लाह, मजा आया उसमें? ओके, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Where do you live? Okay, so you study in Alamdar Educational Institute. Okay, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? और आप यहाँ फिर आएंगे, इसके बाद भी आएंगे इंशाअल्लाह. ओके, तो आपको मज़ा आया अपने टीचर्स के साथ? स्कूल में कैसा मज़ा आता है आपको? माशाल्लाह. आपके फेवरेट टीचर कौन है?